Greetings everybody, and I welcome you on this channel, Anuj Mishra, Genius Labs. We are doing GOC PYQs. Let's continue our discussion further. So on your screen you can see question number 8, which is amongst the following compound the strongest acid is which one? अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे देखते हो आप? थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड देखो ऐसे समझ सकते हो, कोई भी एसिड है उसको कैसे समझते हैं? इट कैन गिव यू H+, it can take OH-, it can accept lone pair if it is a Lewis acid. If you remove H+, its conjugate base should be stabilized, okay? Or if it is, let's say, dispersing the negative charge or dispersing the electron cloud, then again it can be a decent acid. So इन सारे क्राइटेरिया को अप्लाई करो. आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास इसका कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है आपको? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से कौन होगा? देखिए, HF वाटर ROH, ये सीक्वेंस हमें पता है. HF वाटर ROH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया, डबल बॉन्ड and single bond. Now ROH is given. Of course, this is better than HC triple bond CH. So I'll put D in front of A. Now coming to benzene and C2H6, they will be of course later because इनकी values 10 पर minus 43 में होती है, minus 42 में होती है. So they will be the worst case here. Option is D. Next question, tautomerism is exhibited by. देखो tautomer क्या है पहले समझते हैं. Tautomerization should not be confused with resonance. Tautomerization में आप equilibrium sign show करते हो, arrows opposite side. And tautomerization can be of multiple types. Keto का enol में conversion हो सकता है. Real H+ migrate in this case. In resonance, you are not allowed to shift position of any atom. But in tautomerization, you shift H+. That's a key difference. Now, tautomerization can be of two types. Diet system और triad system. Diet system जहाँ पे 1-2 position के बीच में H+ move हो रहा है, यानी 1 से 2. HC and HNC is one example. There is a triad system जहाँ पे 1 से 3 पे move हो रहा है, जैसे कि ketoenol, nitroacinitro, nitrosoxime, amide, okay, iminol, imine and amine. These systems are 1-3 systems, or these are called triad system. So tautomerism is exhibited by which of the following questions in front of you? Check option number A. ऑप्शन नंबर ए में क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास है? क्या इसमें टॉटोमराइजेशन हो सकती है? यस, इट इज एन इनॉल. आई कैन ड्रॉ इट्स कीटो. सो मैं सिंपली क्या करूंगा, OH को मूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूंगा. चेक ऑप्शन नंबर बी. यू हैव 2 डबल बॉन्डोज एंड बीच में 2 डबल बॉन्ड लगे. यहाँ पे कुछ भी H अवेलेबल नहीं जहां से मैं रिमूव कर सकूं. ऑप्शन सी में मेरे पास H अवेलेबल है, लेफ्ट साइड वाला भी है, बॉटम राइट वाला भी है. आई कैन टेक एनी ऑफ देम. एंड ऑप्शन डी में अगेन द नेक्स्ट अल्फा पोजीशन H इज अवेलेबल, यू कैन मेक इनॉल. सो द करेक्ट आंसर, type in chat box what answer you going to mark. Answer is A, C and D. Answer is A, C and D. Can you do that? Question number 10, an aromatic molecule. Now, so again a question where I will require you to understand aromaticity once again quickly. Aromatic compounds fundamental. Cyclic, sp2, planar structure, delocalization of electron cloud inside the ring all across. This should happen. 4n plus 2 pi electron, यानी कि 2, 6, 10, 14 electron should be moving inside, and this is the basic criteria of any aromatic structure. Aromatic structure जैसे कि benzene, naphthalene, anthracene, phenanthracene, ये सब stable structures होते हैं, right? Furan, pyrrole, thiophene, they are all stable structures, aromatic structures. Pyridine also, okay? Now, aromatic molecule, what all condition must be satisfied? Just look at this. Have 4n pi electron? No. 4n pi electron is for anti-aromatic, not for aromatic. 4n plus 2 pi electron, yes. B is correct, C is correct, D is correct. Planar structure होगा sp2 geometry के साथ, sp2 hybridization के साथ. Question number 11 on your screen. The correct statement concerning the structure E, F and G are. It's a good question actually. एक बार ध्यान से देखो. E को CH2 CH3 CH3 लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड CH3 है. इधर पे CH2 CH3 CH3 लगा है, डबल बॉन्ड OH CH3 है. इधर पे CH2 CH3 CH3 लगा है, डबल बॉन्ड CH3 OH. एक बार आप सारे स्ट्रक्चर जहां से चेक करो. अब मेरे को बताओ इसमें कौन कौन से ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं आपको. जैसे एक ऑप्शन लिखा हुआ है E, F and G are रेजोनेंस स्ट्रक्चर. क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकते हैं? क्या मैं H को रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मूव कर सकता हूँ? आंसर इज नो. रेजोनेंस स्ट्रक्चर नेवर अलाउज यू टू मूव एनी एटम. The position of each and every element has to be same in resonance. We can't change position of elements. So it cannot be the case. Option number B, EF and EG are tautomers. EF को ध्यान से देखो, कीटो का इनॉल बना दिया, and EG अगेन कीटो का इनॉल बना दिया, तो दोनों केसेस बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है. F and G are geometrical isomer. एक देखिए आप ध्यान से, one side CH2 CH3 and OH are same side, other side CH2 CH3 and CH3 are same side. So you're just flipping the position, hence they're geometrical. F and G are diastereoisomers. Remember, and this is a very important point, please note down in a notebook right away.
Geometrical isomers are considered under diastereoisomers. I repeat my sentence, listen it very carefully. Geometrical isomers can be considered under diastereoisomers because they are non-superimposable, non-mirror images. Non-superimposable, non-mirror images. Okay, done. So what answer shall I mark for this? Answer will be B, C and D. I'll mark B, C and D as an answer. ठीक है, कर लेंगे. Next question on your screen, question number 12. The correct statement about the following compound is. Look at the compound carefully. अब इसमें क्वेश्चन आप Cl को देखो ध्यान से, CH3 को देखो, H को देखो. H दोनों H बैक साइड है, दोनों Cls आपकी तरफ है और CH3 बीच में कहीं पे हैंग कर रहा है. So answer for this case, option 1, the compound is optically active. Yes, we are not getting any plane of symmetry kind of situation here, right? The compound possesses center of symmetry. No. The compound possesses plane of symmetry. No. अगर ऐसा होता तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता था. The compound possesses axis of symmetry. Yes, it is having axis of symmetry. Which axis of symmetry it is having, right? So you can have the axis of symmetry is basically along the diagonal positions, right? So you can mark the option accordingly. Answer for this question will be A and D. Thanks a lot for watching this video. Keep liking, subscribing, sharing with your friends.